Uh, Good morning first of all, and I welcome to this beautiful workshop जिसमें हम सीखेंगे कि नई टेक्निक सॉफ्ट स्किल्स बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है एंड व्हाट आर द टेक्निकल एंड फंक्शनल थिंग्स जो कि हम सीख सकते हैं, हमें सीखने चाहिए. So I'll start officially with an introduction slide, and then we will move ahead. So here I go. So initial hiccups, so which is okay, I think. So my name is Sanjeev Bhutani. I have 22 years of work experience, exposure to diverse companies, worked with brands like ITC and Vardhaman in my professional life when I was an employee. Mission to help business owners to solve their business problems. Education, MBA from Punjab University and MCOM from Himachal University, plus a certified life coach as well. When I talk about the career, this we have discussed last time also. Just a quick recap. I started my career from Ludhiana. I belong to Chandigarh. ये कॉल हम चंडीगढ़ से कर रहे हैं. Then I moved to Delhi. I worked near ITO. Then I moved to Bangalore. वहाँ पर MG Road के पास मेरा ऑफिस था. Then I moved to Mumbai. भिवंडी में काम करा. चेन्नई मेन सिटी में. हैदराबाद सिकंदराबाद में काम करा. कैलकाटा मेन सिटी में था. गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट में गया. Then came back to Chandigarh, which happens to be my hometown. Total 7 states, 2 union territories, and worked with 3 reputed companies of India. तो ये सारा कुछ करने के बाद in the year 2020 when COVID hit, सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, हम भी बंद थे. So this idea came to my mind that I need to become a corporate coach, a trainer, so that जो कुछ भी लाइफ में सीखा है उसको मैं वापस दे पाऊँ. आई एम एन एम्प्लॉय टर्न्ड एम्प्लॉयर एंड हैव लर्नड थिंग्स द हार्डेस्ट वे, यानी कि धक्के खा करके सीखे हैं कि कैसे कैसे अपने आप को मैनेज करना है. यू नीड टू मैनेज द कंपनी, यू नीड टू मैनेज योर सेल्फ, ट्रैवलिंग, दिस दैट, वो सारा कुछ करके सीखा है बस. देन इफ आई मूव फॉरवर्ड, some glimpses of my programs. This is I hope it will be visible to you. ठीक है. आई थिंक सर आपको मेरा वीडियो नहीं आ रहा होगा. इट्स ओनली द पीडीएफ फाइल विच इज कमिंग, है ना? नहीं, वीडियो नहीं आ रहा है. वीडियो नहीं आ रहा ना, एक मिनट. चलो, आई विल शो दैट एट अ लेटर टाइम, सो दैट इज नो प्रॉब्लम. लेट्स मूव अहेड. बिकॉज मैंने जब इसमें देखा तो मुझे दिख गया था कि इट इज नॉट कमिंग, बट एनीवेज विल मूव अहेड. ओके, सो दिस वाज ए स्मॉल इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद आई विल टेक यू थ्रू टू द नेक्स्ट स्लाइड, and then we can move ahead. So interaction with different workshops and training sessions. So लोगों से interact करना और सीखना और सिखाना, this is what I love to do, और मुझे मजा आता है ये सब करके. Then some conferences, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बेल इन पंचकुला, जहाँ पर which is the नवरत्न of India, वहां पर भी वर्कशॉप्स किए. Then कुछ स्कूल टीचर्स को ट्रेन किया है. Then Chitkara University, then an IT company, then with the other real estate sector, dental university. So यहाँ पर जाकर के उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, देखना, and then sort it out with the training and workshop. This is what I do. So Siddharth Rajshekhar is my mentor, Suren is his mentor. Interaction with the other coaches of India, top level. So this is what I have done so far. And now, if you can also please brief introduction, and then I will share with you कि क्या content program बनाया हुआ है, and then systematically I will demonstrate कि हम क्या करने जा रहे हैं. Over to you, sir.
Yeah, good morning. I am Mukesh Thakur. I have superannuated from Central PSU EPIL. It is a central government company with the Department of Heavy Industries involved in the multifarious activities of construction, contracting, and execution of projects across India, across the overseas also, including Sri Lanka, Myanmar, Hmm. Oman, Hmm. and other neighboring countries, third world countries. Right, sir. I have been in EPIL for 12 years. Prior to that, I was in Satluj Jal Vidyut Nigam, a power generating company which is operating in Himachal Pradesh. I was there for about 20 years in different roles. I was involved in the construction of Natpa Jhakri hydropower project, the largest hydropower project in the country, in Okay. various capacities. I have a very good construction experience from ground level to the senior management level. Then I had a tenure with the Delhi Metro for about 2.5 years. I was involved in the construction of Airport Express line. You might have traveled in the Hmm. Airport Express line. I was in charge of the underground portion, the Right. tunnel which takes from Shivaji Terminal to the Dhaulan Kuan. Okay. That part was with me underground. Oh, And then very I was nice. overseeing the construction of an elevated corridor from Lajpat Nagar to Okla, elevated Okay. corridor. Okay. So I had about 2.5 years in Delhi Metro. Then I had a tenure in EPIL. In EPIL, I Okay. was involved in different projects. And in my last assignments for 2 years, I was the regional head Hmm. located at Guwahati for 1 year at Guwahati and for another year at Delhi, overseeing Okay. the overall operations of the northern region, which Hmm. comprises of all the northern states. Okay. Okay. So it is, I was dealing with all kind of contracting business, construction Hmm. operations, legal issues, Hmm. financial issues, technical issues, Hmm. and all those resolving the problems of the site team, coordinating with Okay. the clients, Okay. and meeting with the senior state government officials, central government officials relating to the execution, memorandum Hmm. signing of MOU, how Very to give nice. it thrust to the overall ongoing works. That was Hmm. my domain area. Very nice. So, you already had a humongous work experience traveling across the country and from ground level to the senior level. So, मजा आएगा सर काम करके बात करके एक्सपीरियंस शेयर करके and I'm very excited to have a joint venture with you on this journey. Thank you so much for choosing me for this opportunity, first of all. It is a two-way process. In fact, rather, it's a feeling of gratitude from my side also that I got a good somebody who can train me, somebody who can guide me, who can handhold me, show me the light, how to move forward. So Yes, it's a two-way yes. feeling. Yes, sir. So thank you so much again from the core of my heart. So in the last 2 days I was working कि जो हमारा जर्नी है हाउ वी हैव टू मिटिगेट इट उसको प्लान आउट करने में आई स्पेंड सम टाइम. सो आज का जो सेशन है दिस इज अ फाउंडेशन सेशन जी जी। because we I'm not a person who will do things ad hoc basis. So I'm a person by nature also who loves to do things in a planned manner, right? Is my voice audible to you? हाँ सुन रही है लेकिन थोड़ी कम है अभी भी। कोई बात, नो इशू। अच्छा. ओके. सो मैं अपनी थोड़े अपनी ज्यादा कर लेता हूँ शायद, मुझे लग रहा है। हाँ हाँ देख लीजिए प्लीज. प्रोबेबली वॉल्यूम को देख लीजिए. वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज करके ऑन योर साइड आपके लैपटॉप पे ऊपर वॉल्यूम का आइकन होगा फ्रंट रो पे. हम्म, फ्रंट रो से यूजुअली थर्ड या फोर्थ की ही होता है, सेकंड या थर्ड की वॉल्यूम प्लस का साइन होगा. जी जी, हो गया। हो गया. जी जी। इज इट बेटर नाउ? हाँ बेटर है, बेटर है।
चलिए ठीक है, बस ठीक है, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं तभी काम करेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपसे शेयर कर लेता हूँ कि व्हाट ऑल प्लानिंग केम टू माय माइंड एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन कि जो हमारी जर्नी है कैसे होने वाली है, कैसे कैसे हम करेंगे। सो दिस इज एन एक्सक्लूसिव प्लान फॉर यू ओनली कि प्लान कैसे करेंगे। सो इसको इज इट विजिबल टू यू? दिस इज Yeah, yeah, it's visible. it is visible. Great. So what this is a launch pad, Mr. Mukesh Thakur, technical part. We are going to launch it. So as we spoke last week, so we have to identify the things in the technical manner, जो technical चाहिए होती है, and then we will talk about the functional manner, so that आपके माइंड में, मेरे माइंड में क्लियर रहेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों। एंड देन जो एक्टिविटीज होंगी तो वो बेटर हो जाएंगी, एंड देन वी विल ले अ फाउंडेशन। So today is session number 1। सेशन नंबर 1 में इट्स अ फाउंडेशन सेटिंग। सो फाउंडेशन मतलब कि एक बिल्डिंग बनाने से पहले हमारी फाउंडेशन का स्ट्रांग होना जरूरी है। फिर उसके बाद 5 मंजिल बनाए, 50 बनाए, सब चल जाएगा, बट वी नीड टू बिल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन। सो टुडे हैपेंस टू बी द डे 4 अगस्त, जहां पर हम फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। सो फाउंडेशन में इट विल बी ओरिएंटेशन, विच मीन्स आज हम बात करेंगे ओरिएंटेशन की, विजन ऑफ अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर की। हम बात करेंगे प्रोग्राम का ओवरव्यू क्या है, व्हाई डू यू वांट टू अचीव योर फ्यूचर रोल विच मींस एज अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, आप क्यों करना चाहते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इफेक्ट्स इट कैन हैव ऑन योर पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज। यानी कि जब हम सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बन रहे हैं या ट्रेनर बन रहे हैं, ऑब्वियसली it has a financial implication, it has revenue generation, it has impact on your own growth, and health wise भी इसका effect रहेगा। So we will talk about that. Then session number 2 and 3 में हम बात करेंगे निच क्लैरिटी। सर ये जितना भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको मैं गूगल ड्राइव पे रखूंगा, सो देयर आई विल शो यू कि कहाँ पर ये रहेगा। इवन आफ्टर दिस सेशन यू कैन जस्ट ओपन दैट ड्राइव, ये आपको दिख जाएगा कि हमने क्या बात करा है। रिकॉर्डिंग में हम्म। इसलिए कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग के वीडियोस भी मैं गूगल ड्राइव में सेव करूंगा, सो वो मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चलेगा, so that Sure. you have a visibility and both of us work in transparent way। जी जी। ठीक है, सेशन नंबर 2 and 3 में हम बात करेंगे निच क्लैरिटी, विच मींस वी विल टॉक अबाउट आइडेंटिफाई योर कोर स्ट्रेंथ, कि आपकी अपनी ताकतें क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ऑडियंस की मैपिंग के बारे में बात करेंगे, एंड फाइनलाइजिंग योर ट्रेनिंग निच। क्योंकि एज वी स्पोक लास्ट डे कि हमें जैसे एक योगा ट्रेनर बनना है, योगा में किस चीज का योगा ट्रेनर बनना है, वेदर फॉर द वीमेन, गर्ल्स, बॉयज, टीन एज, ओल्ड एज, किसके योगा ट्रेनर बनना चाहते हैं। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट डीप डाउन, that we will discuss about in the niche clarity session। Session number 4 and 5 have been designed wherein we will talk about the course development। यानी कि जब हमें पता लग गया कि हमें इस एरिया में जाना है, फिर उसके बारे में हम कोर्स की डेवलपमेंट करेंगे, which means there will be a curriculum which I will help you out कि मार्केट को कैसे देना है, you will help me out कि what is it that you want to deliver to the market। बेसिस द निश क्लैरिटी में जब हमें क्लैरिटी हो जाएगी फिर हम कोर्स की तरफ चलेंगे, which means creating your courses outline। हम कोर्स की आउटलाइन डिफाइन करेंगे। इट इज लाइक if I have to talk on the let us say communication, so communication में what am I talking about, an active communication, verbal communication, written communication, non-verbal communication, barriers of communication क्या। so that is what we are going to define in the कोर्स डेवलपमेंट, कि करना क्या है और क्यों। यहाँ पर हम बात करेंगे डिजाइनिंग द ट्रेनिंग मटेरियल, विच मींस कि उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, डिलीवरी स्ट्रक्चर क्या होगा, कि अगर कोई आ रहा है कि उसको 3 डेज का कोर्स देना है, 5 डेज का कोर्स देना है, 1 मंथ का देना क्या है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेशन नंबर 6 में हम बात करेंगे वेबसाइट कॉन्सेप्ट्स, जो कि टेक्निकल बंदा करेगा, बट यहाँ पर आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि वेबसाइट जब बनती है तो उसके पीछे क्या क्या हमें कंटेंट चाहिए होता है। इट इज लाइक अबाउट यू, अबाउट योर इंटरेस्ट, व्हाट यू कैन डिलीवर टू द मार्केट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट कि वेबसाइट आपकी अपनी वेबसाइट होगी जहां पर हम डेवलपमेंट बंदे को अलाइन करके वी विल टॉक अबाउट दैट। सेशन नंबर
7 एंड 8 में हम बात करेंगे सोशल मीडिया इंटरफेस। सोशल मीडिया इंटरफेस, एज यू नो दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद आप और हम भी अभी इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। You found me जी on जी। the social media, then we interacted, and then we are taking the things ahead. So ये सारा कुछ पिछले I think in a span of 1 week हुआ है, and we need to thank social media again. Social media के pros and cons तो हैं ही हैं, this we know, but अगर हम religiously यूज करते हैं उसको, as a professional यूज करते हैं, और कैसे यूज करना है, I will talk about that. कि फेसबुक में अगर पोस्ट करनी है तो वो कैसी पोस्ट जानी चाहिए, उसकी स्कीम क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका थीम क्या होगा। फेसबुक का एक अपना एक थीम रहता है, इंस्टा का अपना है, लिंक्डइन का अपना है, बिकॉज ऑडियंस सब जगह डिफरेंट है। फेसबुक में सारी ऑडियंस है, इंस्टा में यूजुअली यंगस्टर्स हैं, लिंक्डइन में यूजुअली प्रोफेशनल्स हैं। तो सबका टेस्ट अलग है, सबको अलग अलग दिखाना है। सो हम सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करेंगे इन सेशन नंबर 7 एंड 8। सेशन नंबर 9 एंड 10 में आई विल टॉक अबाउट कंडक्टिंग वेबिनार्स। जैसे कि आपने अपनी लाइफ में काफी सारे सेमिनार्स करे होंगे, आपने डिलीवर भी किए होंगे और आपने अटेंड भी करे होंगे। सो वेबिनार इज द एक्सटेंडेड वर्जन जहां पर हम ऑनलाइन लोगों से बात करें, सो दैट बिकम्स वेबिनार। सो सेमिनार को जब ऑनलाइन डील करते हैं उसको बोलते हैं वेबिनार। तो वेबिनार करने के लिए हम और आप बात करेंगे कि उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसका प्रमोशन कैसे करना है, एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होंगी, और टूल्स कौन कौन से यूज करने हैं। सो दैट वंस यू नो कि मेरा कोर्स बन गया, वेबसाइट में मैं अवेलेबल हूँ, सोशल मीडिया में मैंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि what kind of person am I, what things I can deliver to the market, what valuation you can give to the people who are looking forward to। उसके बाद फिर वेबिनार कंडक्ट करना, which means wherein we do a lot of planning, we promote our webinars, and then we get into the engagement strategies और sales pitch करा जाता है इसमें। So ये हो जाएगा सेशन नंबर 9 एंड 10 में। देन सेशन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर देंगे, विच विल बी फंक्शनल पार्ट। सो पहले हम टेक्निकल कर रहे हैं, सो दैट यू विल गेट एन ओवरव्यू। कुछ चीजें आपको पता होगी, कुछ नहीं भी होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ हम हैंड होल्डिंग करके आगे चलेंगे। सेशन नंबर 11 में अब हम आ जाएंगे सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज यू हैव टोल्ड मी दैट यू वांट टू बिकम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। क्यों बनना चाहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। वी विल टॉक अबाउट 5 टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, व्हिच मींस लिसनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल। की कम्युनिकेशन happens to be a very very critical area in the corporate world, चाहे वो जूनियर स्टाफ हो, मिडिल लेवल हो, सीनियर मैनेजमेंट हो। लोगों के अंदर दिक्कत क्या आ रही है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। वो कहते हैं कि चलो हमारा क्या जाता है, सरकार का जा रहा है, हमने क्या करना है, कंपनी का है, कंपनी देखेगी। आई हैव सीन सच एटीट्यूड। परसों मैं एक सैटरडे आई वाज, फ्राइडे आई वाज विद द बैंकिंग प्रोफेशनल्स, बद्दी में उनको कुछ ट्रेनिंग देना था। So there I saw these were the youngsters, average age was like 26 years, total 36 students थे वहाँ पे। I had to deliver on emotional intelligence। तो वहां पर मैंने देखा कि स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा एटीट्यूड मैंने देखा कि बैंक देखेगा, हमारे को क्या करना, हम तो एम्प्लॉई हैं। सो कम्युनिकेशन इम्पार्ट करना, कि आपस में इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन कैसा होगा। ऑन सैटरडे आई वाज विद एन आईटी कंपनी, वहाँ का जो बैकएंड स्टाफ है मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ कि ऑन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ओनली। सो वहां पर मैंने उनसे पूछा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है। कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आ रही है इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन करना, कि लोगों से बातचीत ही नहीं कर पा रहे हैं हम, या फिर सामने वाला हमें ठीक से नहीं बता पा रहा है और हमको उनको नहीं बता पा रहे। सो विल टॉक अबाउट दिस इन सेशन नंबर 12। सेशन नंबर 11 सॉरी, सेशन नंबर 12 में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की, व्हिच मींस सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, इमोशनल कंट्रोल एट द वर्क प्लेस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, डीप डाउन इसको हम कवर अप करेंगे। सेशन नंबर 13 में वी विल टॉक अबाउट द लीडरशिप स्किल्स, कि अगर कंपनी में हमें एज अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर लीडरशिप के रोल मिलता है, हमें ट्रेनिंग के लिए रोल मिलता है, तो व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ अ लीडर। सो ये सारी वर्कशॉप्स मैंने करी हुई हैं, एंड आई फाउंड दैट कि ये आपको पता होना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट दोज थिंग्स फर्स्ट। सिचुएशनल लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे।
सेशन नंबर 14 में वी विल टॉक अबाउट सेटिंग गोल्स, स्मार्ट गोल्स, टाइम बाउंड प्लानिंग, डेली वीकली ट्रैकर, वर्कशीट्स का बनाना, एक डायरी का होना, डायरी में देखना कि मॉर्निंग में क्या करना, आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, नेक्स्ट वीक में क्या करना है. सो आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज विच आई हैव सीन ड्यूरिंग माय टेन्योर एज अ ट्रेनर या फिर जब मैं एम्प्लॉय था, आई हैव सीन कि लोग गोल सेटिंग ठीक से नहीं करते हैं आज की डेट में भी. सो यूजुअली दे फ्लो विद द वाटर, कि जैसा चल रहा है वैसा चलते जाएंगे, और कुछ अर्जेंट होगा तो हम उसको फटाफट करके दे देंगे. बट इन ऑर्डर टू मेक एम्प्लॉयज मोर प्रोडक्टिव, हमें ये बताना होता है कि गोल सेटिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो हम इसके बारे में बात करेंगे. सेशन नंबर 15, माय फेवरेट टॉपिक, टेकिंग ओनरशिप. कि once we take ownership at the work, then we can talk about accountability, इनिशिएटिव कैसे लिया जा सकता है वर्क प्लेस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ टीम सेटअप कैसे बनाया जा सकता है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो सेशन नंबर 15 में, बिकॉज यहाँ पर भी मैंने देखा है कि when employees are working in a company, वो ओनरशिप नहीं लेते हैं. वो कहते हैं कि हमारे को दो बारी पंच, एक बारी लंच, लाइफ एट टंच. सो दिस इज द स्ट्रेटजी विच पीपल फॉलो. सो वी हैव टू मेक पीपल अवेयर कि अगर वो ओनरशिप नहीं लेंगे, देन देयर इज ए हाई चांस कि वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, एंड देन दे विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन लाइफ. सेशन नंबर 16 में we will inch towards the wrap up, which means wrapping up हम करेंगे कि जितना कुछ भी हमने कर लिया, the recap of the syllabus, question answer है, final tips and encouragement, वो सारा कुछ हम करेंगे सेशन नंबर 16 में, which will happen at the end of September, because हमारे वीकली 2 सेशंस रहेंगे, एक एक करके हम इन टॉपिक्स को करते जाएंगे. Then what I have done over here is कि I have created a Google Drive. मैं आपको Google Drive दिखा देता हूँ. So this is a Google Drive for you, sir. तो हम क्या करेंगे कि ये लिंक मैंने आपको आपके मेल आईडी पर भेज दिया हुआ है, विच मीन्स कि जो भी हमने माइंड मैप में देखा, या जो हमारा रिकॉर्डिंग होगा, आई विल कंटिन्यू टू पोस्ट इट ओवर हेयर डेट बाय डेट. कि वट एवर वी हैव डिस्कस टुडे, इट विल बी पोस्टेड ओवर हेयर, जो माइंड मैप में भी दिखाया, और जो वीडियो भी होगा या कुछ असाइनमेंट्स भी होंगी, वो हम यहाँ पोस्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे ये गूगल ड्राइव में आप देख रहे हैं, सो दिस इज अ फाउंडेशन एंड असाइनमेंट्स. तो यहां पर आप देखेंगे आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 2 वर्कशीट्स फॉर यू, व्हिच मींस ऑन द फाउंडेशन डे हम बात करेंगे पर्सनल स्ट्रैटेजी की, हम बात करेंगे कैरेक्टर वर्कशीट की. सो यहां से आप इस गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं. सो यू विल बी गिवन ऑथराइजेशन टू राइट इट ओवर हियर डायरेक्टली, सो दैट मेरे को जब देखना होगा, आई विल बी एबल टू सी इट कि आपने जितना काम किया वो हो गया कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ देन वी विल एक्सचेंज द मैसेज. ठीक है. सो ये गूगल ड्राइव रहेगा आपके लिए, एंड उसके साथ ही आई विल बी क्रिएटिंग वन फोल्डर ओवर हेयर, जहां पर हम बात करेंगे कि जो सेशन की हमारी आज की डिस्कशन रही है, जो कुछ भी हमें करना है, उसके वीडियो जो होंगे वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे, सो दैट after the session you want to recollect something, तो you can quickly go to the drive, वीडियो ऑन करा कि इस टॉपिक का थोड़ा सा दोबारा समझना है, you can just access it and you can move ahead. Is it okay, sir? या श्योर. Right. ठीक है, तो इतना हमारा हो जाएगा. नाउ टुडे इज द फाउंडेशन डे. सो फाउंडेशन डे में हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है. आई एम गोइंग बैक टू द माइंड मैप. सो माइंड मैप में कुछ इस तरीके से जो टॉपिक्स रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक भी आपके माइंड में चल रहा है, डू लेट मी नो दैट, वी कैन टिंकल इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन जनरल मैं ये चाहता था कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं. ओके. आज फाउंडेशन कोर्स में वी आर गोइंग टू अनफोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे इटसेल्फ. नाउ दिस इज सेशन नंबर 1 का हम अभी सब इनिशिएट कर देते हैं, which means I want to understand why do you want to become a soft skill trainer? If you can reply me back that, sir. मैं इस पर नोट डाउन करना स्टार्ट कर दूंगा.
In fact, I feel whatever you have learned over a period of time during the course of career journey, Right, sir. you can share your experiences with the, I mean, outside world, corporates, Hmm. and Right, other staff other youngsters who are now into this profession. right, sir. Plus, plus another area which I foresee, I foresee the because I come from Uttar Pradesh, we have a huge pool of students who Hmm. are largely largely unaware of how to face the challenges in life, Okay. they do not have the requisite skills, they do not have the Hmm. insight, how to take up a particular, say, interview, how to take up a train themselves for, say, job, how to, Hmm. I mean, all because my state is a big state, Right, sir. so I feel lot many students they require some kind of grooming, some kind of training to mentor them, to guide them, to handhold them, because most of the students are from, say, smaller towns, tier 2 towns. Hmm. I feel there is a lot of scope for me to work in this area Okay. because lot many people are looking for Hmm. jobs, admissions, even seeking to upgrade their manners, etiquettes, and dressing up area. Hmm. Perfect. Okay, so this So, is what you have been able to make out from your own experience जो आपने आसपास में देखा होगा कि these are the missing links and you want to cover up that delta which exists. in fact, I also took a lot of time to acquire all these skills because it took me almost 15, 20 years to, because I was Hmm. from a rural background. I Hmm. came from a small town of Uttar Pradesh and moved into the job. So we did not Okay. have this kind of formal training. I was educated in a, say, village school in my Uttar Pradesh for up to 50 years. And then I Hmm. moved to district headquarters at Kulu, where my father was posted Okay. in a government school. Hmm. Luckily, we got a very good job. So all this to develop myself into a confident professional, into a authenticate professional, I took a lot of time. So Hmm. maybe we can shorten this time for the other people who are connected with Yes. us. Yes. Yes. Correct. Wonderful. Wonderful. And now there are many other areas also wherein you can contribute to the society. Now my जी जी. question to you will be why what stuck you कि मुझे सॉफ्ट स्किल्स ही करना है नॉट द टेक्निकल स्किल्स व्हाई सॉफ्ट स्किल्स In fact, as you told sometime during the first day of interaction, it is only the 85% of the soft skills which matter to the job delivery. यस इम्पैक्ट एट द वर्क 15%, प्लेस and only the 15% I could have started teaching mathematics or English to anybody where I live. यस I could have started earning, but then I thought, yeah, earning is not not my desire. I ओके But then I found that this is the area where we need a lot of people need to be impacted. They are not I mean grown in the way, even we could not groom our son, to be honest, to ओके be into a confident person. ओके He's a postgraduate, all things, but still probably I feel ke, mm, the उतना kind नहीं of हुआ things which I am looking for, he is not having. हाँ ओके ओके So सो if we could not do that to him, so how come a ordinary person, a person from, say, humble background, or who is just able to pay the fees to the schools, he will be able to develop?
Very nice. Very nice. So, and unless you have these kind of skills in today's world, it is difficult to move forward. It is difficult to Hmm. move forward because a lot of Yes. in the corporate world, in the industry, in the banking, in jobs, lot many politics, lot many push and pulls, lot many Hmm. manipulations. All Hmm. they are order of the day, rather. Yes. Yes. Very and nicely. and and ethics, morality, value system, they all have taken a backseat. But you Hmm. have to live in this world. You have to live in this world. You have to survive in this world. So Yes. how to train yourself in these kind of situations and Hmm. do your best. Yes. Wonderful, sir. So at least I can get a reasonable clarity that you want to put whatever. Obviously, there is no question that you don't have knowledge. You have enough high knowledge. You are a knowledgeable person. It's only that we need to collect those things, put into a structured bucket, and then give it back to the people who really need it, so that they can develop more in life. Right? Hello. जी जी जी. ऑडिबल है, वॉइस ऑडिबल है ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो। I can hear you clearly. हाँ, वो बीच में ना आपका वो इट गॉट हैंग फॉर कपल ऑफ सेकंड्स, सो नो इश्यूज, ओके। Okay. सो what I have noted over here is, why do you want to become a soft skills trainer? To share your own experience with the outside world, authenticate professional skills. Uttar Pradesh youngsters lack of knowledge, interview, grooming, training, becoming a mentor. Tier 2 smaller towns, jobs, admission, etiquettes, dress area. So it took you 15 to 20 years to acquire skills which you want to give them back in a quick manner, in a structured and straightforward manner. Then, of course, the study which was done by Carnegie University, United States, 85% impact we can make if we have good soft skills. So this is a fair, reasonable clarity in your mind. Now, I will move a little bit ahead. Why soft skills matters in today's world? Can you please, you have already informed, there are 5 reasons why soft skills matters in today's world. Changing workplace demands. Because if you are working in Delhi, the demand is different. If you are working in Kullu, the demands are different. If you are working in Mumbai, the demands are different. So जब सॉफ्ट स्किल्स हमारे पास हो जाती हैं, we have reasonable soft skills and idea at the back of our mind, we become adaptable. So which happens to be a core component in the soft skills area, कि हम कितनी जल्दी adapt हो जाते हैं with the given situation. डिपार्टमेंट भी चेंज हो गया, बॉस भी चेंज हो गया, कई बार सिटी चेंज होगी, कंट्री भी चेंज हो जाती है. So how quickly we can adapt to the changing workplace demands, so that only can be done once a person has reasonable soft skills. Emotional intelligence versus IQ. So I think ये भी आपने अपनी corporate life में देखा होगा. Emotional intelligence is basically uh, how emotionally we are connected with people, how we can keep ourselves in control with the given demands of corporate life or demands in the family, for example. Whereas intelligent quotient more or less talks about कि आपने कितना theoretically सीखा, करा कोर्स करिकुलम क्या करा. So when it is soft skills, so we talk about EQ, which is the emotional quotient or emotional intelligence. So वो लाना जरूरी है in today's world, because अगर हम 20 साल पहले चले जाएं सर, या 25 साल पहले, लेट अस से इन द ईयर 2000, 1999 2000, तब एक वो आ रहा था, 2K बग आ रहा था कि आईटी सिस्टम एकदम से चेंज हो जाएंगे बिकॉज सेंचुरी जी चेंज जी हो रही जी. है. हम्म. केओस मच गया था कि पता नहीं क्या होगा दुनिया का. देन इट केम द ईयर 2001 2002, जब मोटोरोला एंड नोकिया के मोबाइल फोन्स आने स्टार्ट हुए. 3310, 3315. सो मोटोरोला का एंटीना वाला मोबाइल. वी वर हैप्पी कि अच्छा अब हम बात कर सकते हैं, और 15 रुपए की इनकमिंग होती थी और 20 रुपए की आउटगोइंग होती थी इन द ईयर 2000, 1999, लाइक दैट.
नोकिया आया, नोकिया ने डोमिनेट किया। उसके बाद स्मार्टफोन्स चलना स्टार्ट हुआ। स्मार्टफोन्स के बाद इन द ईयर 2008 2009 मोबाइल्स का थोड़ा क्रिस्प वर्जन आने स्टार्ट हो गए। देन इन द ईयर 2012 2013 व्हाट्सएप आना स्टार्ट हुआ, फेसबुक का हुआ, इंस्टाग्राम हुआ। देन चैट जीपीटी पिछले 2-3 साल से काफी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। सो विच मीन्स अगर हम पिछले ज्यादा दूर नहीं जाएंगे तो लास्ट 25 years में देर हैव बीन ह्यूज चेंजेस विच आर हैपनिंग इन एंड अराउंड अस। सो बंदे वही टिकेंगे जो इन चेंजेस के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। सो वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी जो भी अवेलेबल है, वी नीड टू वर्क एज पर द करंट डिमांड्स विच आर रिक्वायर्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आज की डेट में अगर हम कहेंगे कि नहीं जी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं करना है, तो बात नहीं बनेगी। हम कहेंगे कि हमें चैट जीपीटी का हेल्प नहीं लेना, सो बात नहीं बनेगी। सो वी नीड टू इक्विप आवरसेल्व्स कि अगर हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है, सोशल इंटरफेस चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हमें मूव करना होगा। और अगर हमारी सॉफ्ट स्किल्स बेटर होती है देन वी विल बी इन अ पोजिशन टू मेक गुड अडेप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। देन सॉफ्ट स्किल्स हमें देता है बिल्डिंग ह्यूमन कनेक्शंस व्हिच मींस we can connect with the humans in a better way because यहाँ पर हमें पर्सनालिटी ट्रेड्स के बारे में सिखाया जाता है, लीडरशिप के बारे में सिखाया जाएगा, टीम वर्क होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, गोल सेटिंग्स होगा। एंड देन वी कैन हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड देन वी कैन हैव हाउ यू कैन बिकम अ पब्लिक स्पीकर, आपको बात कैसे करनी है, ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा आपका, एंड हाउ यू नीड टू राइज इन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ आएगा। सो दैट मीन्स सॉफ्ट स्किल्स हमें हेल्प करता है बिल्डिंग ह्यूमन कनेक्शंस, मैन टू मैन कनेक्शन बेटर हो जाता है। देन सॉफ्ट स्किल्स हमें ये भी सिखाता है कि क्लाइंट एंड टीम एक्सपेक्टेशंस क्या है। लाइक व्हेन आई वाज ट्रेनिंग अ सेल्स टीम ऑफ एन आईटी कंपनी कपल ऑफ वीक्स बैक, तो देयर आई सॉ क्लियर गैप कि वो सेल तो कर रहे हैं लेकिन उनको सेल्स पिच करनी नहीं आती है। सो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कस्टमर आपसे एनआई हो जाता है, कहते यस। परसों की वर्कशॉप में व्हेन आई वाज इन मोहाली, सो उनसे पूछा क्या है, वो एब्यूजिव कस्टमर है, यूएसए का कस्टमर है, वो बात बात में गालियां दे देता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा क्या आपने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करा, कहते हाँ सीनियर्स को रिपोर्ट हमने कर दिया है। तो मैंने कहा उसमें क्या रिजल्ट निकला, कह रहे वो उनको भी अब्यूजिव है। तो मैंने कहा वो किस कंट्री से है, कहते वो कस्टमर यूनाइटेड स्टेट से है। तो मैंने कहा उनका कल्चर ऐसा ही है, सो वी कैनॉट चेंज देयर कल्चर, बट वी नीड टू वी नीड टू क्रिएट सर्टेन थिंग्स एट द बैक ऑफ आवर माइंड कि ऐसे कस्टमर को हमारे को कैसे डील करना है कि हे वी आर हेयर फॉर द प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स। सो देर इज नो नीड टू बिकम अब्यूजिव एंड नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज एनालिसिस कि वो अब्यूजिव अगर हो रहा है क्यों हो रहा है। वो कहते हैं कि हमारे डिजाइन में वो नुक्स निकालता है। मैंने कहा नुक्स क्यों निकालता है जी, वो एडिट करवा देता है हर डिजाइन को। मैंने कहा एडिट क्यों करवाता है, वो कहते हैं कि उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो अपने इम्पल्सिव हो जाता है बहुत जल्दी। तो मैंने कहा अगर ऐसी चीजें आ रही है यू नीड टू राइट इट डाउन ऑफिशियली कि जब भी आप हमें रिक्वायरमेंट दे रहे हैं सो गिव दैट इन इन वन शॉट, एडिट भी करना है, डू इट दैट इन विद इन द डे सो दैट हम रीवर्क नहीं करें। तो कहते हैं ठीक है सर, ये वाली हम अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस इट विद यू। मैंने कहा ठीक है। सो सॉफ्ट स्किल्स में जब ऐसी वर्कशॉप्स हम करते हैं देन we can make the expectation of the clients which means the customer की expectation या फिर teams की expectation, इनको हम पूरा कर पाते हैं because client client means customer, हर कंपनी में कस्टमर चाहिए, कस्टमर है तो कंपनी, कंपनी है तो एम्प्लॉयज है। सो ये एक बड़ा ही वास्ट एरिया वेर इन द सॉफ्ट स्किल्स एरिया वी ट्रेन द सॉफ्ट स्किल्स टू द सेल्स फोर्स कि कस्टमर से बात क्या करनी है, कैसे बात करनी है, लीड्स कैसे जनरेट होंगी, लीड्स की कन्वर्जन कैसे होगी, और उसकी वाइंड अप कैसे करना है। सो ये मैंने 6 वीक्स का एक वर्कशॉप किया था विद ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड जून, एंड आई वाज एबल टू फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स। और उसमें जो हमारा एक फेवरेट, सभी का फेवरेट चीज था वो था आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस। तो हुआ क्या कि ये आईटी कंपनी है, तो आईटी कंपनी ने बोला कि सेल्स सेल्स का काम है, सेल्स लेके आना। उसके बाद जैसे वो लोग वेबसाइट बनाते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या सीआरएम बना रहे हैं, वो सारा बैकएंड करता है, डेवलपमेंट टीम करती है, डिजाइनर्स करते हैं। तो उन्होंने बोला कि डिजाइनर को जब हम बोलते हैं तो वो समझता नहीं है ठीक से। तो मैंने कहा आपने समझाया कैसे, कहते जी हमने ऐसे समझाया। मैंने कहा आपने उसको क्या बोला, जैसे एक टीम लीडर था, मैंने कहा आपने अपने सबॉर्डिनेट को क्या बोला, मैंने बोला कि स्टेप नंबर 1 2 3 एंड इट इज डन।
तो मैंने उससे पूछा कि समझ में आ गया, कहता हाँ समझ में आ गया। तो लेकिन वो फिर गलती कर रहा है। मैंने कहा नहीं, गलती पहले आप कर रहे हो एज अ टीम लीडर। जब आप अपनी टीम को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने बोला कि क्या समझ में आ गया, तो बंदे ने बोला कि हाँ समझ में आ गया। तो आपने बोला चलो ठीक है जाओ करो, और फिर आपने मिस्टेक कर दी। अब मैंने कहा एक स्टेप और करना, जब आप उससे पूछोगे कि क्या समझ में आ गया एज अ टीम लीडर, तो वो बोलेगा कि हाँ समझ में आ गया। अब मैंने कहा आप उसको क्वेश्चन करना कि क्या समझ में आया मुझे बता। जैसे उसने ये करना स्टार्ट करा, कह रहा सर मेरी 90% प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई कि जब मैं अपनी टीम बंदों से पूछता हूँ कि क्या समझ में आया मुझे बताओ, तो वो उसमें लड़खड़ा रहे हैं कि स्टेप नंबर 1 नहीं याद रहा, किसी को स्टेप नंबर 3 याद नहीं रहा। सो दैट मीन्स कि अब जब मैं मीटिंग करता हूँ एज अ टीम लीडर, तो अब मेरी टीम को क्लियर होगा कि मुझे प्रॉपर तरीके से सुनना है, एंड मेरा बॉस उसको रिवैलिडेट भी करेगा कि जो समझ में आया बताओ मुझे क्या समझ में आया। सो दैट मीन्स कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, टीम की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, उसको आपको कैसे समझना है, ये हम सॉफ्ट स्किल्स में कवर अप करते हैं। Step number 5, point number 5, rise in remote and global communication, which means अगर हमारी अच्छी soft skills हो जाती हैं, then the person will be able to talk in a very very attentive manner within the company system or within the global system, चाहे वो Zoom पर कॉल करे या ट्रैवल करे। तो उसके पास अलर्टनेस, एजिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ज्यादा आ जाएगी कि अगर मैं मीटिंग में हूं और अगर मीटिंग में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, देन आई नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट मीटिंग, क्योंकि मैं वहां कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूं। बट मीटिंग में भी अगर मैं बैठा हूं, मीटिंग में इट इज माय मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई नीड टू कंट्रीब्यूट इन दैट मीटिंग फर्स्ट। ये नहीं है कि वहां पर गए सुनकर आ गए, बीइंग एन एक्टिव लिसनर। सो दिस इज व्हाट, एज सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, सो वी इम्पार्ट दीज थिंग्स थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू आर डिस्कशन, थ्रू वीडियोस, थ्रू आर एक्सपीरियंस, कि ये चीजों को करना कितना जरूरी है टू ग्रो देमसेल्व्स इनटू द प्रोफेशनल लाइफ। सर यहाँ तक क्लियर है? जी जी, या। राइट। सो बिकॉज फर्स्ट, जैसे कि हमने अभी वर्कशॉप स्टार्ट करा, माय क्वेश्चन टू यू वाज व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, तो आपने मुझे ये 5 चीजें बता दी। नाउ अभी हमें पहले अपने आप को कन्विंस करना होगा कि सॉफ्ट स्किल्स का इम्पैक्ट कितना होता है। जैसे ही हम ये स्टार्ट करते हैं, तो इम्पैक्ट उसका बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि जब हम वर्कशॉप भी करने जाते हैं, जैसे अभी मैं वर्कशॉप करने जाता हूँ, सो आई डोंट स्टार्ट द वर्कशॉप स्ट्रेट अवे। उससे पहले 15 से 20 मिनट हमें फाउंडेशन बनानी होती है। लाइक वी प्ले सर्टेन गेम्स, वी डू सम इंट्रोडक्शन, वी टॉक अबाउट कि पिछली ट्रेनिंग सेशन में आपको क्या समझ में आया, वी टॉक अबाउट कि आपके चैलेंजेस क्या हैं। अभी परसों जैसे मैंने जब सैटरडे मॉर्निंग आई वाज इन मोहाली विद एन आईटी कंपनी, तो जाने से पहले कुछ वी नीड टू डू सम होमवर्क। तो जाने से पहले ही आई आई क्रिएटेड अ गूगल फॉर्म, जो मैंने वहीं पर ही, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस टीम का 16 लोग हैं हम लोग, तो वहां पर मैंने ऑन द स्पॉट वो गूगल फॉर्म उनके ग्रुप में डाला। एंड आई गेव देम कि आपके पास 10 मिनट का टाइम है, 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आंसर मी राइट नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे ही ट्रेनीज को हम एक्सरसाइज देनी स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके अंदर एक कोहेसिवनेस आ जाती है, दे फील कंफर्टेबल कि हमारे को अगर सर दर्द है तो दवाई सर दर्द की मिलेगी, पेट दर्द की नहीं देगा वो। एंड आई यूज दिस टर्म्स क्लियरली विद दैम। मैंने कहा ऑनेस्टली ज्वाइन करना ट्रेनिंग सेशंस को, ओरिजिनलिटी रहना, ऑथेंटिकेट करना जो कुछ भी है इसमें, वी आर नॉट हेयर टू प्लीज एनीबडी। जैसे ही हम ये एज अ ट्रेनर, चाहे ऑनलाइन वर्कशॉप हो चाहे ऑफलाइन हो, वी हैव टू मेक द ऑडियंस फील कंफर्टेबल कि जो कुछ हमें सीखना है ये बंदा सिखाएगा, वैसा ही करेगा। वो कंफर्ट जब आ जाएगा, देन the workshop goes in a better manner. Okay, so this was about point number 1. Now point number 2, it's over to you. What do you understand your role as a trainer? आप क्या समझते हैं कि ट्रेनर, जब आप ट्रेनर बन जाते हैं या बन जाएंगे आने वाले टाइम में, तो आपका रोल क्या होगा? इफ यू कैन टेल मी, लेट अस से 3 टॉप रोल्स एज अ ट्रेनर, क्या होगा? In fact, as you told me about these 5 points, uh, uh, I shall be able to
explain to the audience, whether they are students, whether they are from the corporate world, that these five which five aspects you have opened up. So Right. we will be able to elaborate on each of these 5 points to the audience. Right, sir. So that I believe will be my role in uh, connecting to the people. Right. Wonderful. So let us see what is written in this mind map. So this mind map has five components. Understanding your role as a trainer, that you are now becoming a trainer. स्टूडेंट्स के बन जाएं, कॉर्पोरेट के बन जाएं, बिजनेस ओनर के बन जाएं. सो चार वर्टिकल्स रहते हैं इसमें. वन इज the students who are in the college or universities. I have trained students MBA marketing. I have trained BBA retail. I have trained business owners real estate के. I have trained IT company. I have trained the banking professionals. I take online workshops. So as a trainer, we first of all we have to be genuine कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं और हम अपने दिल से हेल्प कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट कि आपने कुछ पैसा दिया और हमने कुछ डिलीवर कर दिया, बट वी नीड टू टॉक सर्टेन थिंग्स फ्रॉम आवर हार्ट. सो पांच चीजें हमारे को याद रखनी होती हैं एज अ ट्रेनर. बीइंग अ रोल मॉडल. सो एज अ ट्रेनर यू कैन बिकम अ रोल मॉडल ऑफ समबडी इन योर लाइफ. So it can be a one-to-one discussion. It can be a role model for the company. Like अभी मुझे एक कंपनी ने रिक्रूट किया था, रिक्रूट नहीं करा, सॉरी, मैंने उनको प्रपोजल दिया था इन द मंथ ऑफ मार्च. दे लाइक माय प्रपोजल. सो अप्रैल में हमने स्टार्ट करा था. सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और हमारा सितंबर तक चलेगा. सो वन आफ्टर द अनदर वी आर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप वेयर इन सामने वाला आपको एज रोल मॉडल देखना शुरू कर देता है कि यस, ही इज एबल टू गेज माई प्रॉब्लम्स. सो प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी को बोलने की प्रॉब्लम होगी, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी, किसी को जो कुछ भी सीखा है उसको एक्सप्रेस करने की प्रॉब्लम होगी. सो एज अ ट्रेनर वी बिकम अ रोल मॉडल कि आपकी ये प्रॉब्लम है, दिस इज हाउ वी कैन एड वैल्यू टू योर लाइफ एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. सर मार्केट को फर्क नहीं पड़ता हमारी क्या डिग्री है, हमारी कितनी क्वालिफिकेशन है. मार्केट कहती है कि हमारी प्रॉब्लम है, क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. यस और नो में जवाब दो Rightly, बस. rightly said. Rightly said. They are not concerned what with what kind of qualification, postgraduates, doctorates we are having. यस, यस. I सो was listening to Mr. Adani yesterday. He was quoting the words of his mother. ओके. ओके. यस. And I was telling my wife, yeah, just see this man. He doesn't have any degree, formal degree, and he was यस. just moving ahead on the words of his mother, who once upon a time probably told him, "Okay, the world does not remember the people who who have withered the storm. They remember the persons and the people who have weathered the storm and come back home safely." यस, यस, यस. सो सो दैट इज हाउ द थिंग्स गो ऑन. सो ये कोट्स है, Yeah, yeah, अच्छे कोट्स है. आई एम ग्लैड कि आपने इसको सुना एंड यू आर एबल टू रिमेम्बर इट. सो एज अ ट्रेनर वी नीड टू बिकम अ रोल मॉडल जिसको भी हम ट्रेन कर रहे हैं. सो एज आई मेंशन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, बिजनेस ओनर है, एम्प्लॉय है. सो एचआर हेड हो सकता है. एचआर हेड को चाहिए कि द एचआर हेड नीड्स yeah. ट्रेनर कि अपने मैन पावर को ट्रेन करना है. सो ये हमारे कुछ वर्टिकल्स होते हैं जहां पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं एज ट्रेनर. देन बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. सो एज अ ट्रेनर वी नीड टू गेट इनटू दिस फ्रेम ऑफ माइंड कि ये नहीं है कि हमारे को इतना आ गया और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. वी नीड टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. जब तक सांसें चल रही हैं हम सीखते रहेंगे. Right, so that is what we need to keep etiquettes. So trainer versus coach versus mentor. So trainer हो गया जो specifically skills को train कर रहा है, which means soft skills trainer होगा कि हमने एक broad level का एक vertical ले लिया soft skills, हम उसको train कर रहे हैं. Coach will be little bit minute, which means कि हम communication के trainer बन गए या leadership के trainer बन गए. So हम थोड़ा सा identify कर देते हैं कि हम टीम इंडिया के बैटिंग कोच हैं या बॉलिंग कोच हैं या फील्डिंग कोच हैं. सो वी डिफाइन अ वर्टिकल इन दैट. मेंटर होगा जो ओवरऑल मेंटरशिप कर रहा है कि इन जनरल ही सीज कि आप एज अ पर्सन, एज अ बैट्समैन आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो.
देन अगर आपकी कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज सचिन तेंदुलकर को अब क्या कोच चाहिए? सचिन तेंदुलकर अपनी जब लाइफ में काम कर रहा था, ही वाज एट द एज ऑफ 16 ही स्टार्टेड प्लेइंग विद पाकिस्तान। तो लेटर ऑन 5 साल के बाद अब सचिन को क्या कोच चाहिए हुआ? सो ही हिमसेल्फ वाज अ मेंटर। सो मेंटर ओवरऑल ओवरव्यू करता है कि आपकी जो जो जर्नी है, वेदर इट इज गोइंग राइट रॉन्ग, या फिर उसको एंटीना को हमारे को कुछ फाइन ट्यून करना है। सो वी नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। Ethical responsibilities, as a trainer it is our duty. Now this is more about the value system. So it is our duty that we need to have value system, solve problems, solve problems. We cannot afford to beat around the bush. Do your homework. कहीं भी हम बात करने जा रहे हैं, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू सेव टाइम ऑफ आवर ट्रेनिंग्स। तो ये हमारे को कुछ मॉरल एथिक्स होते हैं, एथिक्स हमारे को रखने होते हैं एज ट्रेनर। देन द लास्ट वन इज ड्राइविंग रियल ट्रांसफॉर्मेशन। रियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सर दैट द पर्सन शुड फील, like here the person should feel that he is in the safe hands। रियल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे को करना है, बिकॉज गूगल पे जाएंगे सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। सो वी नीड टू सेव टाइम ऑफ द ट्रेनिंग एज वेल एज आवर ओन टाइम। एंड द पर्सन शुड फील कि हाँ, अब मेरी डोर सही बंदे के हाथ में है। वट एवर यू वॉन्ट टू ट्रेन